Hello everyone, welcome back to my channel. In this lesson we are going to learn a very important topic, preposition in English grammar. Preposition is the very important topic. In this video we are going to learn key of English preposition. मैंने 2 वीडियो बनाया है preposition पे, तो अगर आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हो. And this is a very important topic. Very important phrases with at, in, on, by, for. ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. एट आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो फ्रेजेस में. चलिए स्टार्ट करते हैं. एट होम, एट वर्क, एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट, एट यूनिवर्सिटी, एट 5 o'clock is the phrase with at 5 o'clock, at night, at noon, at midnight, at midday, at the top, at the bottom, at the party, at the moment. This is a very important phrase with at. एंड नेक्स्ट इज़ इन. इनके साथ आप कौन कौन से यूज़ करेंगे? वी कैन से दैट इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, in 1978, in 1998, in 1999, and so on. In March, in April, in May, and so on. In the spring, in the summer, in the winter, in the 1980, in a minute, in a second, in an hour or 2 hours, in 2 days, in bed, in hospital, in the picture. So this is all in very important phrases with in. इनके साथ ये सब सारे आप यूज़ करना है आपको, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट ऑन मंडेज, on the weekend, on Monday morning, on Wednesday evening, on the birthday, on holiday, on time, on Christmas Day, on New Year Day, and so on. Next is by. By car, by train, by ship, by plane, by sea, by land, by underground, by him or her, by next week, by next month, by next year. And next is for. Very important phrases with for. For a week, for a change, for an hour, for 2 days, for 3 days, 3 weeks, for 3 weeks, for 2 months, for 3 months, for 5 months, for 6 months, for 5 years, 6 years, 7 years, and so on. For breakfast, for lunch, and last is for dinner. These are all very important phrases with preposition at, in, on, by, for. ये 5 preposition मैंने आपको आज बताए हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स के साथ. एटलीस्ट ये सारे वर्ड्स के साथ आप यूज़ करेंगे तो आपकी preposition
क्लियर हो गई होगी कि प्रिपोजिशन आप कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, किसके किसके साथ यूज़ करना है आपको प्रिपोजिशन। ये थर्ड वीडियो है प्रिपोजिशन की जो कि मैंने आपको आज बताया है। मैं और भी वीडियोस, प्रिपोजिशन अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं और भी प्रिपोजिशन पे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी प्रिपोजिशन अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड मेरे चैनल पे बने रहिए इसके लिए, और मेरे चैनल पे बने रहिए, और पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।